Uh, these subjects having 30 marks for mid-sem and 70 marks for end-sem. Prerequisite for these subjects is basic electronics and engineering. Okay, this subject you all you all were studying in your first year. Okay, and Yes. related to these subjects, one practical lab is there. It is digital electronics lab. Okay, course objective Course objective of these subjects are to study number system and design and implement of combinational circuits and sequential circuit, to understand the functionality of logic families, to introduce the PLD and ASM chart, to introduce the student to basic of microprocessor. And outcomes are, on completion of this course, student will be able to learn, simplify the Boolean expression, design and implement the combinational as well as sequential circuit, then develop the simple word application using the SM and PLD devices, then also explain the organization architecture of computer system. These all you will learn after the completion of this course. Okay, this is my classroom for DLD theory subjects. Both classroom are different. For DLD, it's a different classroom, and for practical subject DEL, another classroom is there. Okay, DLT. DELD, Digital Electronics and Logic Design. This is the snapshot of my classroom. This is the snapshot of my blog. For any information related to DLD subject and DLD practical, you go on my blog and click on this link, theory DLD and practical DEL. Okay, so these are syllabus of DLD subject. These are 6 units. So first unit, which is based on minimization technique, in that you will learn KMAP, SOP, that means the standard output product term. Then second unit is the combinational logic design, in that the mux, demux, okay, in sequential flip-flop and register are there. In fourth unit, algorithm state machine, that means SM chart and PLD device are there. Then unit fifth, there are logic families, and sixth unit is related to the introduction to computer architecture, in that microprocessor, control bus, address bus. These all are topic related to 6 units. Okay, these all are syllabus of your DLD subjects. Okay, so now concentration on first unit. First unit is based on minimization techniques. So these are the syllabus of first unit: logic design minimization technique. Then in that, the Boolean function using KMAP and Quine-McCluskey method. And again having points, representation of sign number, sign magnitude number, soft form, sum of product form, and minimization using the KMAP. These all contents related to your first unit. Okay, one important point, that is the one reference book is there. Chaitanya Kala plus please off your video. This is the RP Jain reference book related to your subject. In that, the 60 to 70 syllabus cover in this book. So please use this book for use this link. Okay. Then, so we will start our subject. So start from basics. So what is mean by digital electronics? Anyone can tell me what is mean by electronics, digital electronics? Gitanjali Patil, unmute yourself and tell me what is mean by digital electronics. What you know about the digital electronics? Hello? Gitanjali Patil? Yes, ma'am.
So tell me what is mean by digital electronics, or what you know about the digital electronics? You know anything about the digital or anything about electronics or combined term digital electronics? Yes or no? Simply say yes or no. Yes, ma'am. Who's this? Okay. I'm asking the question to Gitanjali. So, Gitanjali, you know the answer or yes or no? Say yes or no. No. Okay. Mute. Nikita Thakre. Okay. Digital electronics is the field of electronics involving the study of digital signal. So what is meant by signal? Signal is the physical quantity which contains some information, which is a function of one or more independent variable. For transferring the information from one source to another source, we require the signal. So there are two types of signals. First one is the analog signal and digital signals. Okay. So again, one point is remaining. What is the application of digital electronics? Where the computer use, there is the application of digital electronics, right? So there are applications are televisions, communication system, medical equipment, military system. All there are use the computers. So these all are the applications of digital electronics. Okay. So types of signals are analog signals and digital signals. So we concentration only on digital signals. Okay. So digital signals having finite number of distinct value. Digital signals are not a continuous signal. That means analog signals are continuous signals. Okay. Or digital signals are finite number of distinct value. Okay. That means the digital signals are not a continuous signal, and analog signals is a continuous signals. So a digital signals also called as a binary signals if a digital signals having only two distinct values, 0 and 1. So for working on the digital signals, we use the digital systems. Okay. So there are two systems for analog signals work. For working on analog signal, we use the analog system, and working on digital signal, we use the digital system. So what is been an analog system? Process of time varying signal that can take any value across a continuous range. That means the analog signals use the continuous signals. For that we use the analog system, and digital signals is not a continuous signal. It having only two distinct value, that is the 0 and 1, or we can say in the high voltage or low voltage, or you can say the true and false value. So for that we use the digital system. Okay. So there are basic about the digital electronic, then signals, two types of signal, analog and digital, and there are two system, analog system and digital system. Okay. So on your notebook, please write down digital electronics definition and types, signals definition and types of signal. Okay. After completing my lecture, you can I'm sharing this PPT on Google Classroom. After that, you can write this all contents on your notebook. Okay. So again, I'm repeated this concept how to write a binary number. I was explained in DLD practical also this concept. So for writing the binary number, we use the 8421, this weighted code, and using this weighted code we can write the binary number. Okay. Again, LSB and MSB concepts. For any number, they're having a two parts, LSB and MSB. For left hand, right hand side, it is called the LSB side. It's having the lower weight, and MSB side, it is called the highest weight. MSB long form is the most significant bit. So the weighted code 8421. In that, the 1 is the LSB side and 8 is the MSB side. Okay.
And binary numbers, these are the variable A, B, C, D. Okay, so when we represent the 5 in binary, we can write 0, 1, 0, 1. Okay, so here the A dash A bar is the MSB side and D is the LSB side. Okay, again these are the binary numbers when variables or inputs are a 2. There are the again binary numbers when the inputs are a 3 and 4. Okay, again these all related to how to write the binary number. For practice purpose, you all please write this table on your notebook. Okay, next main concept is the what is meant by logic variable. So you know all about the variable in programming language. That means in C and C++, you know the what is meant by variable, right? So when these variable are used in DLT subject, then it is called the logic variable. So logic variable can be represented by letter symbol A, B, C, or X, Y, Z. Any types of any A, B, C, D, A to Z you can use as a variable. The variable can have only one of the two values, 0 and 1, right? In programming language, variable having integer variable, character variable, string, then number variable. But in the DLD, variables having only two values, 0 and 1. These variables are used to denoting the various inputs and outputs in digital circuits. A Boolean expression is a logic statement that's either the true or false. So one more concept is the algebraic expression. Okay, so algebraic expression is an expression built up from integer, constant, variable, and algebraic operation. That means the addition. Nikita Thakre, video off करो आपका. Nikita. A Boolean function is described by algebraic expression consisting of a variable. A Boolean function of n variable is represented f x1, x2, x3 up to xn. It is nothing but the Boolean function. How to write the Boolean function using the f of in bracket x1, x2. x1, x2 is nothing but the variable. Okay. So what is meant by algebraic expression? Algebraic expression is nothing but the Boolean expression, and it represent using the integer, constant, variable. Okay, and what is meant by Boolean function? It describe an algebraic expression with consisting binary variables. Okay, so next point is different way of representing the Boolean function. Till this, we learn what is meant by digital electronics, what is meant by signal. There are two types, analog and digital, then logic variable, then how to write binary number, okay, and algebraic expression. Next point is different way of representing a Boolean function. There are three main way to representing this Boolean function: sum of product, product of sum, and canonical, SOP, and POS. These all topic cover in today's lecture. So sum of product, these all term were covered in your first year lecture. Anyone can me tell? Just a minute. Amol Chavan. Amol Chavan. Shubham Thoke. Hello. Shubham Thoke is there?
ये आपकी कंसेप्ट हो गई है क्या फर्स्ट लेक्चर में, मतलब दैट मीन्स द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट ईयर में? यस मैम, हो गई थी। यू नो द सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम? नो मैम। नो? हेलो? यस मैम। These concepts were covered in your first year lectures, that means the basic electronics and engineering? यस। Yes. No, ma'am. Who's this? Please raise your hand or at least tell your name. I am this, or give the answer. Okay. There are two different way of representing a Boolean function. Sum of product, product of sum, and canonical sum of cost. It canonical also called as the standard SOP and POS. So some terms are defined using the OR operation. Please concentrate. Some term defined by using the OR operation, and product term is defined by using AND operation. Okay. So sum of product SOP method is fundamental product products output one for the corresponding input condition. Remember these things. SOP is required output 1 and POS is required output 0. So first term is the SOP, standard product form. So this is concern, SOP is formed by adding or operation the product term. SOP are called as the mean term also, right? So these mean terms represent using this small m. Also mathematical expression, so this symbol it is used for the representation, representing the soft form. That means summation small m, these are used to representing this soft form 0 and 3. 0 and 3 is nothing but the mean term, right? So mean term, that means the small m3. So what is mean by small 3? So 3, this is the a bar bc is equal to, is nothing but the, we can also represent using the small m3. So how 3 is come? A bar we consider a bar for 0, then b is equal, b is 1 and c is 1. So here 0 1, then 0 0, right? Understood? How this m3 is come? A bar bc, that means the 1 0 0, it is also called as m3. Then next term is the a b bar c, that means the 1 0 0. If bar is there, then it is considered as a 0. If bar is not there, that means the uncomplement it considered as the 0, and complement term it considered as 0, and uncomplement is considered as the 1. Okay. So 1 0 0 is considered as the 4. Okay. So please give answer. Nikita Thakre. Nikita Thakre. Is there? Yes, Nikita? Okay. So please tell me, A bar BC means what? Matlab tell me the binary number of A bar BC. A bar consider as a 0. अगर किसी भी टर्म के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है, बार है, तो कंसीडर क्या करना है आपको? 0. अगर बार नहीं है तो क्या कंसीडर करना है? 1. तो एक के ऊपर बार है तो कंसीडर क्या करना है? यहाँ पर कंसंट्रेशन करो. मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो? निकिता प्लीज टेल मी. मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है कि मेरा पॉइंटर कहाँ पर है? यस और ओके गुड. सो A bar is considered as a 0. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वो दिखाई दे रहा है क्या?
Yes. ओके, ए बार बी सी, इसको कैसे लिखना है? इफ ए बार विथ कंसीडर एज अ 0, अगर बार नहीं है तो कंसीडर करना है 1 1. ओके ओके, these are three variable, a b c, these are three variable. 3 way. Okay, so Yes. this is binary number 0 1 1, और इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा? यूज 8421 वेट, 8421. so here only three variables, that means 8 नहीं रहेगा वहां पर, so 421. so कहां पर 1 1 है? 2 and 1 की जगह पर क्या है? 1 है ना. तो क्या आएगा इसका नंबर? 2 plus 1 कितना होता है? 3. 3. राइट, और इसको ही Yes. मिन टर्म बोलते हैं, तो स्मॉल m कंसीडर एज अ 3. अंडरस्टूड? एटलीस्ट सिर्फ इस टर्म पर प्लीज सब लोग कंसंट्रेशन करो. ए बार बी सी, ये टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ये टर्म अगर समझ में आएगा तो आपका बाइनरी नंबर की भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, मीन टर्म भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो ए बार यहाँ पर डैश लिया तो उसका ए बार यहाँ पर आता नहीं कंप्यूटर में डायरेक्टली, तो ए बार बी सी, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 1. और कौन सा पोजीशन वेट करते हैं? 4 2 1. ये किसके लिए मैंने पोजीशन वेट यूज कर रही हूँ? ताकि आपको उसका डेसिमल नंबर मिल सके. तो यहाँ पर 1 1 कौन सी जगह पर है? 2 1 की जगह पर है, तो वो क्या आएगा? 3. तो इसी को बोलते हैं M3, और इसी को यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा SOP में 3. राइट, ओके. नेक्स्ट, ए बार ए बी सी बार, सो इसका क्या आंसर आएगा? ए बी बार सी बार. चैतन्य? Yes, ma'am. हाँ, so tell me the answer. A B बार C. आपको समझ में? मैंने क्या बताया आपको? अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कंसीडर एज अ 1, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कंसीडर एज अ 0. सो A B बार C बार, सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 0 1 1. गुड. और उसका ये नंबर कौन सा आएगा? डेसिमल नंबर. Decimal यहाँ पर number. भी पोजीशन वेट आएगा 8421, लेकिन कौन से प्लेस पर है? सॉरी, हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखना था मुझे 100. सॉरी, सो 100, राइट, क्योंकि ए के ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पर? 1. और बी और सी के ऊपर बार है तो क्या आएगा? 0 0. सो 0 0. वेट क्या आता है? 421. सो कहाँ पर 1 है? 4 के प्लेस पर 1 है, सो ये नंबर क्या होगा? 4. और इसी को बोलेंगे 4. मिन टर्म 4. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, सो आप इसका बोल सकते हैं ए बी सी का कैसे, क्या बाइनरी नंबर आएगा ए बी सी का? ए बी सी, ये जो Yes, भी ma'am. लास्ट क्या नंबर आएगा? बाइनरी नंबर बोलो ए बी सी का. ABC का binary number. हाँ, Uh, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 1 बार 1 नहीं. 1 देन 1 1. ओके, गुड. अगेन मैं किसी और को भी ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. शुभम, शुभम is there? Please unmute Yes, ma'am. yourself. Okay, you understand what is the Yes, ma'am. okay, so tell me the binary number of A B C bar. यहाँ पर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A B C bar. 0. ओके, अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में मीटिंग बंद हो जाएगी. हाँ, तो हम इसी के पहले हमें क्या करने हैं? सो हमारा जो भी टॉपिक है वो हम कवर कर लेंगे. और अभी आपको क्या स्टार्ट करना है? साइड बाय साइड चैट विंडो में क्या करना है आपको? आपका रोल नंबर प्लस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या करना है? टाइप करना है. ओके, सो प्लीज शुभम, टेल मी योर आंसर. ए बी सी बार, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ दिस? 1 0. व्हाट इज? 1 1 0. 110. गुड, राइट आंसर. ओके, और इसकी मिन टर्म क्या आएगी?
M6 6 कहाँ से आया? ये बता सकते हैं आप? ये 6 कहाँ से आया? आपको दिखाई दे रहा है मैं जो टाइप कर रही हूँ वो? शुभम, Yes, ma'am. ओके, आपको दिखाई दे रहा है मैं टाइप कहाँ पर कर रही हूँ? जो चैट कर रही है ना, चैटिंग कर रही है, वो नंबर, रोल नंबर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है सर, मैम। मतलब बच्चे टाइप कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे, या आप टाइप कर रहे हो? यस, नहीं नहीं, बच्चे। तो आपके स्क्रीन पर ऐसा आता है क्या बाकी जब टाइप करते हैं तो? आप दिखाई दे रहा है मैम। दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ भी ऐसा? ओह, दिखाइए। तो रोल नंबर टाइप कर रहे हैं ना मैम, वो हाँ, मैंने इसलिए यहाँ दिखाई पर नहीं दे रहा है नीचे का। ओके, ठीक है। यहाँ पर राइट सब लोग प्लीज, ये जो भी जितना भी आपको थ्योरी छोड़ के आप जितना भी पीपीटी पर है वो प्लीज आपके नोटबुक के ऊपर लिखो। ओके, आज के लेक्चर तक हमने सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट तक ही पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन पूछने वाली है कि बाइनरी नंबर कैसे आते हैं। मैं कौन सा भी नंबर किसी भी स्टूडेंट को दे दूंगी और उसका बाइनरी नंबर पूछने वाली हूँ। सो प्लीज बी रेडी विथ बाइनरी नंबर ऑफ एनी टर्म। Okay, or also its corresponding decimal number. Okay, again here is the example a b plus abc. This is also the example of SOP. SOP means the sum of product. ये जो भी प्रोडक्ट टर्म है abc is the product term, ab is the product term, और इन दोनों की sum is nothing but the sum of product. Next example, abc plus cde plus bcd. These all are the example of sum of product. ऑल जस्ट अ मिनट, मैं किसी को क्वेश्चन पूछती हूँ। पवार बड़गुजर, पवन सॉरी, पवन बड़गुजर, पवन बड़गुजर, दिव्या सोनवणे, दिव्या सोनवणे, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर। हेलो दीप्ति, ओके, मयूर ठाकुर, Yes, ma'am. okay, what is mean by sum of product? Sum of product, SOP, sum of product, SOP is nothing but the Yes. sum of SOP. sum of product terms. What you say? बोलो ना आप। Sum of. sum of product, okay. Hello. हाँ बोलो आप, बोलो मयूर। SOP is sum of product, no? ओके, और इसमें मैक्स टर्म कंसीडर करते हैं या मिन टर्म? Mean terms. ओके गुड। और सिंबल कौन सा है ये मिन टर्म रिप्रेजेंट करने का? ये समेशन। ओके Okay. ओके, नेक्स्ट, रिमेनिंग 5 minutes. Next, SOP, and next related term of SOP is the standard SOP form. Yeah, we can say that the canonical SOP form. A standard SOP expression is one in which all the variable in the domain appear in each product term in the expression. That means अगर आप ये एग्जांपल अगर देखते हैं तो ए बी प्लस ए बी सी, इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? सी वेरिएबल मिसिंग है, राइट? अगर ये टर्म देखते हो ए बी सी में डी वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ पर ए वेरिएबल मिसिंग है और यहाँ पर ए वेरिएबल मिसिंग है, सो इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो ऑल वेरिएबल इसमें कवर नहीं हो रही है, सो इट इज नॉट द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, सो अगर आप ये एग्जांपल देखते हो एबीसी, इसमें हर टर्म एबीसी कवर हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एबीसी बार है, यहाँ पर ए बार सी है, ए बार बी बार सी,
तो इस हर वेरिएबल इसमें कवर हो रहा है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें? ABC। तो हर टर्म में हर वेरिएबल कवर अगर होता है तो इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन। सेम यहाँ पर अगर नेक्स्ट एग्जांपल AB बार CD, इसमें भी सब टर्म एक्सप्लेन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड SOP। So what is the use of standard SOP expression? It is important in constructing the truth table and in K-map for simplification purpose. Okay. So canonical form also called as the standard SOP. So if given expression AB plus AC bar BC, this is not a standard SOP. So how to convert this SOP into the standard SOP form? For that, so concentrate here. AB, here C term is missing, right? So add C plus C bar. Then in this term B plus is missing, so add the B plus B bar. Then BC, A plus A bar. Okay. So solve this using the distributive law. So what is the distributive law? Here the distributive law. Distributive law said A plus BC is equal to A plus B, A plus C. This is the distributive law. Using this distributive law, we solve this expression. So ABC plus ABC bar plus ABC bar, AB bar, AC bar, B bar, ABC. ठीक है। और जितनी भी रिपीटेड टर्म है वो हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं और फाइनल एक्सप्रेशन आता है ABC plus ABC bar plus AB bar C bar plus A bar BC. This is the standard SOP form, right? This is non-standard SOP form. This is the standard SOP form. ABC plus ABC bar plus AB bar C plus A bar C. Okay, understood? If anyone having doubt, please ask me. Unmute yourself and ask me the question. Dipti Pagar. Dipti Pagar. Yes, ma'am. आपको समझ में है मैंने क्या बताया अभी? What is आप मुझे क्वेश्चन का आंसर, आपको पहले तो ये बोलो कि आपने आज क्या पढ़ा है? Last 1 minute is there, so fast बोलो. Sum of products. Sum of product. Okay. तो डिफरेंस है क्या स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में एंड सिंपल SOP फॉर्म में? कुछ डिफरेंस होता है? हेलो हेलो मैम रिपीट करो ना एक बार। स्टैंडर्ड वाला या SOP पूरा SOP? हेलो अभी वो एक स्लाइड ये वाली ना स्लाइड? ओके। ये स्लाइड ना जहाँ पर मेरा कर्सर है वही ना? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग है, लगे तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? सो इसके पहले आपको क्या टास्क है, ये पूरा नोटबुक पर यहाँ तक मुझे चाहिए, ठीक है? और आपको क्या करना है, प्री रिक्विजिट टेस्ट देनी है आज ही। गूगल क्लास में मैंने ऑलरेडी शेयर की है, तो वो प्री रिक्विजिट टेस्ट देनी है और आपके नोटबुक में मुझे यहाँ तक पूरा लिखा हुआ चाहिए। कल में लगे तो ये स्टैंडर्ड SOP जो भी ये फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो प्लीज जितना भी PPT पर है वो प्लीज आपके नोटबुक पर लिखो। प्रैक्टिस के अलावा ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।